हेलो। हेलो। लाइव ही मेरी। हम्म, तो हम लोग अभी न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, तो चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर है, दिल्ली का एडिशन। मुझे फ्री में मिल जाता है ऑनलाइन। तो सबसे पहले एक सेकंड। तो सबसे पहले ये है रिबेल एनयूजी इन म्यांमार एक्यूजेस junta junta of attacks in earthquake hit region। ये ये क्या है भाई? तो बेसिकली जो जुंटा होता है वो मतलब जब कोई coup होता है, coup देता जो हम लोग बोलते हैं, किसी देश में होता है, तो उसमें जो मिलिट्री लीडरशिप जो आती है उसको जुंटा बोलते हैं। यूजुअली जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज होते हैं वहाँ पे जुंटा ये इस वर्ड का प्रयोग हमें ज्यादा दिखता है। अभी देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। म्यांमार रेजिस्टेंस। और एक तो जो बात है ना कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो पहले दो तीन पैराग्राफ्स होते हैं वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें ही 99% ऑफ द स्टोरी छुपी होती है। आगे का जो होता है वो बेसिकली काफी यूजलेस ही होता है। Myanmar's resistance forces military junta of launching attacks on rebel targets in the earthquake-hit areas in the country's Sagaing region and Shan state. Okay, so then the rebel National Unity Government, which had called for a pause in the fighting, said the junta uh, on Sunday carried out bombing raids in various locations close to the epicenter Friday. The areas that were bombed included parts controlled by the Ta-Ang National Liberation Army, one of several armed groups fighting the junta since the 2021 coup. ये तो काफी अजीब सी स्टोरी है यार। मतलब अर्थक्वेक हुआ है उसके ऊपर ही लोग ऐसे सब कर रहे हैं। मतलब पता नहीं यार, मतलब सच है कि झूठ है, इस पे भी हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। कम से कम इंडियन आर्मी हमारी पहुंच रही है। मांडले पहुंच गई है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है म्यांमार में। बढ़िया सिटी है। वन डेड थ्री इंजर्ड एज ट्रेन डीरेल्स इन ओडिशा। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार? हमेशा का है इंडियन रेलवेज का। भाई ट्रेन पटरी पे चलानी आती नहीं क्या? पटरी पे चलानी होती है यार ट्रेन, एक ही तो जॉब होता है पटरी का, ट्रेन का सॉरी। One person was killed and three sustained injuries when the Bengaluru Kamakhya AC Superfast Express derailed near the Nirgundi railway station 10 km from Cuttack in Odisha on Sunday. 11 coaches of the train bound for Kamakhya and Guwahati went off the track at 11:54 a.m. as the train had slowed down after crossing a bridge over the Mahanadi. The impact on one passengers was minimal. On passengers was minimal, official said. अच्छा, तो यार बहुत बुरी बात है यार, इतने सारे ट्रेन डीरेल हो रहे हैं। वो लास्ट ईयर, पता नहीं लास्ट ईयर हुआ था कि 2 साल पहले हुआ था, पर वो एक दूसरा एक बड़ा सा हादसा था, वो तो काफी खतरनाक था। उसके बाद अभी जालना में भी हुआ था, जयगांव में हुआ था, पता नहीं महाराष्ट्र में हुआ था बड़ा सा ट्रेन का हादसा। सही नहीं है यार। RSS is India's banyan tree of immortal culture and modernization, says Modi. Says Modi.
आरएसएस इज इंडियाज banyan tree of immortal culture and modernization. एक सेकंड, मैं टाइटल चेंज कर सकते हैं क्या लाइव का? क्या लिखा है यहाँ पे? मैनेज, क्या है? ये मेरा पहला लाइव है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एडिट क्या है? एडिट क्या है? ओके, तो मैंने लाइव का नाम अभी चेंज कर दिया है। तो आरएसएस इज इंडियाज banyan tree of immortal culture and modernization, says मोदी। तो मोदी अभी फिलहाल यहाँ पे आ गए नागपुर में। गिरगांव मुंबई में, ठीक है। Revelers at a procession on the occasion of Gudi Padwa, making the Marathi New Year in Gurgaon ऑन संडे। अच्छा, गुड़गांव मुंबई में एक लोकेलिटी है, वहाँ पे बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया तरीके से, बहुत बड़ी अंदाज में गुड़ी पाड़वा को सेलिब्रेट करते हैं, जो मराठी न्यू ईयर होता है, ठीक है। कॉलिंग द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ a banyan tree of immortal culture, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said service was the vital air of the organization। तो हम सबको कहीं ना कहीं पता ही है कि नरेंद्र मोदी के जो रूट्स है वो आरएसएस से है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी काफी आरएसएस को ये करते हैं, आप समझ गए होंगे। एक्टर मोहनलाल apologizes over Empuran रो सीएम, अपोजिशन लीडर्स एक्सप्रेस सपोर्ट टू आर्टिस्ट। ये मेरे को नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है किसी भी तरीके से। 50 माओइस्ट सरेंडर इन बीजापुर, सीएम प्रेजेस छत्तीसगढ़ पॉलिसी। बढ़िया, 50 माओवादी ने सरेंडर कर चुके हैं बीजापुर में। 50 alleged Maoists, 14 of whom carried a cumulative bounty of 68 lakh on their heads, surrendered before the security forces in Bijapur of Chhattisgarh on Sunday, the police said. Inspector General of Police P. Sundararaj said this was the highest number in terms of surrenders in large numbers, adding that 26 Maoists surrendered on an occasion last month, also in Bijapur. एक सेकंड दोस्तों, ये लाइव सेंड कैसे करते हैं? लाइव का लिंक कैसे सेंड करते हैं? मुझे ये डाउट आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है यार, कैसे करता है? शेयर करना है, शेयर करना है, ठीक है। समझ गया, समझ गया। तो तो सेकंड पेज पे जाते हैं, दिल्ली का न्यूज़पेपर है, तो उस हिसाब से सिटी न्यूज़ में दिल्ली की न्यूज़ आती है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ये वाला पेज ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, बस इतना जान लो कि आप गवर्नमेंट को बीजेपी ने मतलब हरा दिया है। तो ऐसे होता है जो होता है। इन्होंने बजट निकाला था और ये तो सारे एड्स है। और अभी स्टेट्स के बारे में देखते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय प्लैनेट इज एग्जिस्टेंशियल, सेज धनकर। तो ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं इसको दोहराने की क्यों जरूरत पड़ती है, पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने मार्च में ही आम आनी शुरू हो गए। मुझे तो आम पसंद भी नहीं है ज्यादा, पर तो भी मार्च में खाने मिल रहे हैं। पहले तो मई में आते थे आम, अभी तो अप्रैल छोड़ के आ, ओ, हमें एक न्यू न्यू व्यूअर आ गए हैं हमारे पास। हेलो, हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू माय स्ट्रीम। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज उसे चैट में लिख दीजिएगा। मैं काफी मतलब चैट में लिख दीजिएगा कुछ, कोई सवाल होंगे तो हम लोग
कंटिन्यू करते हैं। ये जो बड़े-बड़े पार्ट्स होते हैं ना, एजुकेशन प्लस वगैरह, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। जो मेन पार्ट होता है वो तो स्टेट्स में होता है, ग्लोबल न्यूज़ में होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में होता है। अगर आपको स्पोर्ट्स का पढ़ना है तो स्पोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं आप। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो अब तक कुछ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चंस होंगे तब आप ये कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम देखते हैं। शाह साउंड्स फुल bugle in Bihar urges people to vote NDA गवर्नमेंट बैक टू पावर। अच्छा, तो बिहार में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो यहाँ वहाँ जाके भाषण करेंगे, प्रवचन देंगे। तो इसलिए यही एक अमित शाह ने किया है। होम मिनिस्टर unveils schemes projects worth 800 crore, face choice between development under Modi, Nitish and Jungle Raj of Lalu and Rabri era meets leaders of ruling front at CM's house। तो भाई ये तो बिहार में तो क्या चल रहा है भाई, बिहार इंडिया का वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, हम कह सकते हैं। कुछ भी चलते रहता है वहाँ पे बिहार में। पता नहीं इतने साल से, अभी 2.5 साल से तो कम से कम बीजेपी का राज है। क्या बदला है वहाँ पे? कुछ बदला होगा तो अच्छी बात है, पर मैं तो चाहता हूँ कि कुछ बदले, पर पता नहीं। लॉ नीडेड टू स्टॉप यूज ऑफ डेड बॉडीज टू मेक अनजस्ट डिमांड्स। TN Tamil Nadu Police Commission. The commission has called for enacting a law akin to Rajasthan Honor of Dead Body Act. The fifth Tamil Nadu Police Commission has recommended that a Tamil Nadu Honor of Dead Body Act be enacted to prevent protesters from using dead bodies to make unjustified demands. ये मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो पढ़ते हैं हम। An increase in the number of agitations using dead bodies and considering demands of collectors, superintendents of police, the commission has called for the enactment of the act on the lines of Rajasthan. Tamil Nadu has witnessed several incidents where family, friends, and supporters of police protest with dead bodies, obstructing flow of traffic. That demand usually involve immediate arrest of the accused and compensation to the victim family by senior police officers. Persuade protesters to disperse traffic would be severely affected। भाई ये जो एक्ट लाने का कह रहे हैं ना, तो उसमें आप समझिए कि एक्ट और एक नए व्यूअर हमें ज्वाइन कर चुका है, तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉ नीडेड, ये वाला जो आर्टिकल है वो। तो हमें ये वी आर कंसर्न विद द फैक्ट दैट कि इन लोग डेड बॉडीज को यूज कर रहे हैं। जो पुलिस है वो कंसर्न है कि भाई हम लोग डेड बॉडीज का यूज कर रहे हैं, डेड बॉडीज यूज कर रहे हैं, डेड बॉडीज मत यूज करो भाई। मेरा एक सिंपल सा कहना है कि डेड बॉडीज को ये जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है, कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। उसे अगर सॉल्व करोगे ना तो डेड बॉडीज को यूज नहीं करेगा, इसको शौक नहीं है डेड बॉडीज यूज करने का। तो फिर यही बात आती है कि डेड बॉडीज मत यूज करो कहने से अच्छा आप उनकी जो समस्या है वो सॉल्व करो। फिर वो डेड बॉडीज का कुछ यूज नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करने का सवाल ही नहीं होगा। ठीक है। अभी नॉन वेजिटेरियन फूड बैंड इन एमपी टाउन, द अथॉरिटीज हैव बैंड ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड्स इन बीजेपी रूल मध्य प्रदेश मैहर टाउन ड्यूरिंग द 9 डे नवरात्रि फेस्टिवल बिगिनिंग संडे। संडे को नवरात्रि है? हैं? नवरात्रि संडे को है? कोई नहीं भाई। अभी मैं हमारी नवरात्रि तो अक्टूबर में शुरू होती है, पता नहीं ये कौन सी नवरात्रि है, पर अच्छी बात है कि मतलब अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि मतलब भाई मैं तो बहुत नॉनवेज खाता हूँ। आज ही मैंने 2 चिकन पी लिया है। मैं तो मुझे नॉनवेज खाना तो बहुत पसंद है। नॉनवेज खाना तो मुझे बहुत पसंद है, तो पर्सनली हर्ट हूँ इस, मतलब मैं तो नहीं मानता यार कि नॉनवेज बैन वैन होना चाहिए। जैसे जो खाना है वो खाओ, नहीं खाना है वो तो नहीं खाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सही बात है ना। अभी कल तो मेरा वही फेस्ट अभी कल तो ये आज है ना, ईद है। तो अगर मुसलमानों ने कह दिया कि आज ईद है भाई, नॉनवेज तो खाना चाहिए, खाओ नॉनवेज, वेज तो भाई बंद ही कर दो। ऐसे थोड़ी चलेगा। ईद के रमजान के टाइम पे तो दोपहर को खाना ही नहीं खाते। ऐसे कह दिया तो कि खाना ही नहीं, खाना बेचो ही नहीं, तो कितना लॉस होगा। ये जो 9 दिन जो क्या बोलते हैं
जो कसाई है उनका जो लॉस हो रहा है, उसकी उससे क्या मतलब उसकी भरपाई कौन थी? शिवसेना forces illegal meat shops to down shutters in Haryana's Sonipat. Shivsena forces illegal meat shops to down shutters in Haryana's Sonipat for Navratri. शिवसेना सोनीपत है क्या? हरियाणा हरियाणा में शिवसेना क्या? क्या? ये कब हुआ? ये कब हुआ? हरियाणा में शिवसेना कब? भाई शिवसेना वाले तो बड़े एकदम क्या बोलते हैं, शौक में हैं अभी। उनके तो बहुत उनके लीडर का बहुत बड़ा मजाक उड़ गया है। अगर काम ऐसे ही करते हैं मजाक उड़ाने वाले। मजाक उड़ाने वाले काम मत करो। Traditional healers are leading the way in Meghalaya's effort to combat tuberculosis. तो वो tuberculosis को 2025 में पूरी तरह से उखाड़ने का अ, इरादा है गवर्नमेंट का 2025 में। तो उसी से रिलेटेड है। 2025 में सब खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या बताऊँ हो या ना हो पर कोशिश तो बहुत जोर से चालू है। तेलंगाना पायोनियरिंग डेवलपमेंट मॉडल। Based on this model, the party is evolving its vision of growth and inclusion as an alternative to BJP's vision nationally, says State Deputy CM Bhatti Vikramarka Mallu. He highlights new schemes in Telangana budget, says Eka census has been held to ensure focused intervention. Whatever the fuck that means. करो डेवलपमेंट करो कुछ सही में तो होता नहीं है, करप्शन ही हो जाता है। ये डेवलपमेंट करने आते हैं गलती से स्कैम हो जाता है। 6 persons killed, 6 injured in landslide in Himachal school. मर गए भाई 6 लोग। ईद उल फित्र आज है भाई, ईद मुबारक सबको। नवरात्रि की मुबारक हो भाई। नवरात्रि की भी शुभकामनाएं शुभकामनाएं सबको। Water to be released from Bhadra Dam. On the Ugadi festival, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announced the release of 2 TMC feet of water from Bhadra Reservoir between April 1st and 5 to allow water to enter Tungabhadra canals. This will protect crops in Koppal, Raichur, Yadgir and ensure drinking water. He said in a release on Sunday as an Ugadi gift to our hardworking farmers and the people of Kalyana, Karnataka. I am happy to share that we have decided to release 2 TMC feet of water from Bhadra Reservoir between 1st April and April 5th to allow water flow in Tungabhadra canals. This will help protect standing crops in Koppal, Raichur. कई बार मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वाटर रिलीज करने से क्रॉप्स को कैसे मतलब क्या हो रहा है क्रॉप्स के साथ। ठीक है। 582 judges transferred by Allahabad High Court. बाप रे। In a major reshuffle, 582 judicial officers have been transferred by the Allahabad High Court in an administrative decision. These include 236 additional district and session judges, 207 civil judges, senior division, 139 civil judges, junior division. The order for annual transfer 2025 was issued on Sunday evening by Satish Kumar Pushkar, Joint Registrar of Allahabad High Court. ठीक है यार ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। Revnath launches scheme to distribute fine rice
फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री दो भाई, फ्री दे दो। तू कर रहा है अभी ये फ्री? Naidu takes part in Ugadi celebrations, says Andhra Pradesh government committed to promoting Telugu language. ठीक है भाई। Kerala, Kerala, Kerala brings out plan for youth and child welfare. ठीक है भाई, क्या नाम है प्लान का? कुछ है नाम? नाम हो तो हम पढ़ेंगे पर नाम नहीं है। मुनम्बम, मुनम्बम, land issue KCVC appeals to MPs to vote for amending of law। तो भाई तो मुनम्बम में कुछ तो इशू था कि जो क्रिश्चियन लोग का लैंड है वो कुछ वक्फ वाले क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है। पढ़ लीजिएगा आप। स्टैंड ऑफ इन हैदराबाद varsity over land dispute। Ten standoff unfolded at the University of Hyderabad on Sunday as per Telangana police detention and campus restricted their movement. Barricades were set up on the east campus, preventing students from accessing the area। भाई स्टूडेंट्स को परेशान मत करो यार, पहले ही वही टेंशन में रहते हैं एग्जाम असाइनमेंट असाइनमेंट होते हैं उसमें पुलिस के चक्कर में। परेशान मत करो यार स्टूडेंट्स को। The three C's that haunt Indian education today। भाई आपको अगर कुछ पढ़ना है ना, किताबें विताबें पढ़ी नहीं जाती ना, तो ये एडिटोरियल पढ़ा करो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर का। जानकारी मिलेगी, पढ़ने की आदत भी लगेगी। दिन में कितने 1000 2000 वर्ड्स होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे शायद, मेरे को अंदाजा नहीं लग रहा। पर अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा सही से, मतलब पढ़ने की आदत लग जाएगी, फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ा करो यार। पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी में नहीं आता। मतलब ये तो भाई ये हो गया क्या बोलते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना हो गया, पढ़ाई जैसा पढ़ना होगा। पर जो नॉवेल्स वगैरह होती है, कहानी वाली किताबें होती है, उसे पढ़ा करो। मेरे पास बहुत सारी है। अभी फिलहाल फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ रहा हूँ। कहानी जैसी किताब नहीं है, पर नॉन फिक्शन है। पर उसने मतलब इंटरव्यू वगैरह लिखे, डायलॉग वायलॉग है, तो थोड़ा बहुत फिक्शन जैसे लगता है, पर काफी रियल स्टोरी है। मुझे मुराकामी पढ़ना बहुत पसंद है। मुराकामी की बुक्स काफी सही होती है, पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है पढ़ के। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था कि पढ़ा करो। पढ़ने से मतलब जो डूम स्क्रोलिंग हम कहते हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो उससे अच्छा तो यही है कि पढ़ो, कुछ सीखने मिल जाता है। और भाई वो आंखें खराब नहीं होती, मतलब कुछ कुछ हो जाती है ऐसे, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग में पढ़ा करो, अच्छा लगता है पढ़ के। एनीवेज, timely restatement, free speech restrictions should be reasonable and not a tool to stifle views। तो भाई जो कुणाल कामरा का जो ये रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसमें काफी लोग कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है पर किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, पर क्या बोलते हैं कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अरे भाई, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसने तो क्या, उसने ऐसा क्या कह दिया भाई? मजाक, सबसे पहले तो मजाक में कह रहा था। और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो भी डिफाइंड डायमेंशन है। और वो जो है ना, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसने रीजनेबली बातें करी है कि नहीं करी है। डिफेमेशन कर दिया भाई, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है, मतलब क्या वो बात में कितना तथ्य है, कितना दूध है, कितना पानी है। कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर भैंस ये कौन होते हैं मतलब जो भी गुंडे गए थे, मैं तो गुंडे ही कहूंगा, जो गुंडे गए थे, वो कौन होते हैं इतनी तोड़फोड़ मचाने वाले? होते कौन है? कोर्ट से ज्यादा बढ़ के है क्या? मतलब भाई, चलो भाई मैं समझता हूँ कि भाई कोर्ट में सबका विश्वास नहीं। भाई तुम जरा सोच के देखो ना भाई, ऐसा क्या कह दिया उसने भाई? चल गद्दार बोल दिया भाई, है वो गद्दार है क्या? है क्या आपके जो नेता है वो गद्दार है क्या? नहीं है। है। है तो भाई फिर तो उसने सही बात की है, नहीं है तो भाई तुम्हें फर्क क्यों पड़ रही है? मत 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 पड़ने दो फर्क।
Anyways, timely restatement free speech. In frog times, every restatement of the basic elements of free speech, law, and democracy is wholly welcome. The Supreme Court of India's judgment quashing a Gujarat police case against Congress MP Rajya Sabha Imran Pratap Gadi for posting an allegedly inflammatory poem on social media is a welcome intervention in favor of free speech. भाई, मेरी जो रीडिंग है वो थोड़ी खराब है. Free speech बोल रहा हूँ. Free speech. Its importance is that it restates nearly forgotten aspects of free speech jurisprudence in an era in which any speech can be criminalized if powerful or influential people claim to be heard by it. The court has reminded the police that they have to honor and preserve the freedom of expression of citizens. For overzealous policemen who rush to register a FIR flattered with as many of speech restrictive penal provisions as possible, even when it is clear that the complaint is politically or criminally motivated. भाई इसमें अभी पुलिस वालों की भी क्या गलती आ रही है? आर्म ट्विस्टिंग करते हैं फिर कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुम्हारा ये करा देंगे, तुम्हारा वो करा देंगे. और ये जो नेता लोग रहते हैं वो तो भाई पुलिस वालों की जेब भरते ही रहते हैं. जब जेब आपकी भारी होती है ना, सॉरी, जब जेब आपकी भर जाती है ना, तो कौन क्या ही कर देगा आपका. जेब भारी रखना सीखो भाई. ईमानदारी से कर. ईमानदारी ये रखो और ईमानदारी से अपनी जेब भरना सीखो. ठीक है. Motivated. Motivated. The court has advised they should consider the effect of spoken or written words based on the standard of their effect on reasonable, strong-minded, firm, and courageous individuals, and not based on people with weak and vacillating minds. ये ये तो रोस्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. तो बेसिकली लॉ में एक ये होता है, एक सिस्टम होता है कि कोई भी जो ये होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी कानून ब्रेक होता है या फिर किसी को कभी तकलीफ होती है, तो एक रीजनेबल पर्सन को हम रखते हैं, एक रीजनेबल रैशनल जो यहाँ पे लिखा है ना, रीजनेबल स्ट्रॉन्ग माइंडेड फर्म एंड करेजियस इंडिविजुअल को हम रखते हैं और उसके नजरिए से सोचते हैं कि जो गुने मतलब जिसने क्राइम किया है, जो गुनेगार है, जो अक्यूज है, उसने मतलब उसने एक रीजनेबल मैन जो भी क्या बोलते हैं, केयरफुल रह सकता है, जितना केयरफुल केयर कर सकता है, ड्यूटी कर सकता है, उसने सारी निभाई थी क्या या नहीं. और जो डिफेंडेंट है मतलब जिसके साथ वो गुनाह हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसकी जगह पे भी रखता है कि अगर इसकी जगह पे कोई रीजनेबल मैन होता, कोई नॉर्मल सा इंसान होता, करेजियस होता, तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम होती है नहीं. ऐसे और फिर उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, कुछ रॉन्ग हुआ है नहीं हुआ है. तो यही बस कह रहे हैं. The effect of the effect of spoken or written words cannot be judged on the basis of standards of people who always have a sense of insecurity or of those who always perceive criticism as a threat to their power or position. See the lines comprising this is Abhay, Uka and Ujjwal Bhuyan. भाई ये तो बहुत सही बात कही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बढ़िया तरीके से उन्होंने पुटअप किया है, इसलिए तो वो जैसे हैं. The court has gone on to analyze the point posted by Mr. Pratapgadi, finds that it does not consult with any religion, race, language, regional group, caste, or community, and makes no imputation against any of them. Against any of them, it contains no appeal likely to cause disharmony or feeling of enmity or hatred or ill will. It dismisses as ridiculous to accuse the appellant of any intention to outrage the religious feeling of any class or insulting its religion or belief. The poem only tells the rulers what the reaction will be if the fight for rights is met with injustice. In effect, the court has found that none of the incidents of the offences relating to divisive speeches having a detrimental effect on public order or any insult or provocation against any religious sentiment could be found in it. मैंने तो पोम पढ़ी नहीं है, पढ़नी पड़ेगी. Overall, the verdict will have to serve as a guide to police officers deciding to invoke Section 196 of the भारतीय न्याय संहिता, exponent of the Section 150 of the Indian Penal Code.
often under political direction whenever a speech containing a trenchant criticism of the government or ministers is made by anyone else who is a or a complaint. The police often invoke the sections related to speech restrictions to browbeat critics and dissenters. Rescue operations are in full swing following the devastating rain-concerned magnitude earthquake centered in Myanmar, which, according to official estimates, has claimed more than 1,600 lives, with the toll rising from hundreds to 4,000 in just 24 hours. Information continuing to trickle in. A significantly higher casualty count cannot be ruled out. Number of injured stands at around 3,400. The damage to infrastructure has been massive, with large sections of densely populated cities such as Bangalore. हाँ बाय माहित नाही and Napata left without electricity. Hospitals are overrun and people are camping in the streets. Their homes reduced to rubble. Myanmar's personal India's unknown violent casualties. Report after Indian military multiple strategies started weekend setting the plane serving respectors to the capital, parts of which were devastated by the full service and the restricting service going on that cross overland from Yunnan province according to Daniel Embassy. Myanmar lives in seismically active region. Seismically active region of the Myanmar includes the Eurasian India and the the constant shifting of these fields are responsible for most earthquakes in the region. Quakes with the magnitude storm Friday are not uncommon. The Sagaing fault, which is one of Myanmar's most active, has produced 6 to 8 earthquakes in the Indian Ocean since 1900, according to the State Geological Survey. Yes. So, yeah, the three C's that want Indian education today. So, yeah. The introduction of the high-profile national education policy 2020 has hidden the reality of government that is profoundly indifferent to the education of India's children and youth. The Indian government started over the last period has demonstrated that in education it is concerned only with the successful implementation of three core agenda items: the centralization of power with the Union government, the commercialization of inputs and investments in education to the private sector, the communalization of textbooks, curriculum, and institutions. Region centralization. Unchecked centralization has been the hallmark of this government function over the last 11 years, but its most damaging consequences have been in the domain of education. The domain of education. The central advisory over education comprising ministers for education. The union and state government has not been convened since September 2019 while adopting and implementing parent education. हाँ माहित नाही दरवाजा बंद करून comprising Ministry of Education and both the Indian and state governments has now been convened since September 2019, even while adopting and implementing a paradigm shift in education through the NEP 2020. The Union government has not seen fit to consult state governments on the implementation of these policies even once. It is a testament to the government's singular determination not to heed any voice other than its own. Even on a subject that is squarely in the concurrent list of the Indian Constitution, the lack of dialogue is accompanied by a giving tendency. Among the most disgraceful acts committed by this government is the coercion of the state governments to implement the PM Shri or PM Food for Rising India scheme of model schools by withholding the grants due to the अरे नाही माहित मला due to them under the Samagra Shiksha Abhiyan as leverage. These funds have been due to states for years as part of the financial support to
required to implement the right of children to free and compulsory education, which came into force in 2010. These actions betray the motivations of a government that cares more about fostering and persons of disability than upholding constitutional guaranteed right to education. It is a flagrant violation of the Constitution, morality, and industry under 65. The report, even the bipartisan and parliamentary standing committee on education, women, children, youth, and sports has called for the unconditional release of the SSA funds to state government and higher education. The government has brought in the draconian draft University Grounds Commission guidelines for 2025, which are fully written or state government from the appointment of vice chancellors in universities established under an updated guideline. The Indian government has done itself. आवाज कमी करा ना बाबा मी इथे अभ्यास करतोय कुठे येताय तुम्ही The Union government has grown itself through the governors who are typically designated as the chancellor of the university monopoly power in the section of the vice chancellor of the state universities. This is a pure attempt to convert a subject in the form currently to the civil because of the Indian government has begun another grievous steps to federalism in today's time. The issue of commercialization. The Narendra Modi government commercialization of the education system has been happening in place, right in full compliance with the NEP as a constitutional guarantee for primary education, school education. The RT provided key safeguards to ensure the accessibility of primary education for all Indian children. A lower primary school within 1 kilometer of every neighborhood has and an upper primary school within 3 kilometers of every neighborhood. The NEP will generally omits to mention the RT fixed over and the concept of these neighborhood schools eventually and school complexes five in this numbers of 4 million is the last scale shutdown of public school and unchecked privatization of school education since 2018 years in the closure and consolidation of 89,441 public schools across the country and the establishment of 42,944 additional private schools. The country's poor have been forced out of public education and into the hands of a prohibitively expensive and under-regulated private school system. In higher education, the Indian government has introduced a higher education finance agency and as a replacement to the university finance commissions or system of block grants. Universities are being encouraged to seek loans offered at market rates of interest on which they are then obliged to repay from the revenue minus 364 report on demands for grants. The parliamentary education has found that found that between 78 to 100% of these loans are being repaid by universities to student fee and other ways. The price of the retreat from financial obligation has been borne by students facing fee hikes. The increasing prevalence of corruption in our education system is merely a manifestation of the commercialization of the primary standard and national assessment and accreditation council to the basically inept national testing agency, public education systems and agencies are increasingly under the spotlight for financial malfeasance. A growing venality and cynicism in our public education system is linked to the government's financial politicization and commercialization of education. There is a communalization of the government's trust then communalization and fulfillment of the strong, long-lasting ideological project of the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the Bharatiya Janata Party of indoctrinating the cultivating hatred to the education system. Explore the NCERT, the Rajasthan school curriculum has been revised with the intent of the maximum of India has been dropped from curriculum in addition to preamble to the constitution was dropped from textbooks until public backlash for the government to convert to mandatory inclusion once again. Our universities, we have seen the large-scale hiring of professors from regime-friendly ideological backgrounds, no matter the comically poor quality of the teaching, social leadership roles, and the institution managed by Indian Institutes of Technology and Indian Institutes of Management and Administrative Jawaharlal Nehru. So, evocatively, the status simple government India has been developed and idealized PVC and new style the qualification professorships
where censorships are only the last intended to enable the influx of educationists who are driven by ideological considerations rather than academic ideas. An idea whose time has come. Over the past few days, India has been announced several names of these. There is one that appears to be the best. For the first time in 5 years, has united fire, but will extinguish the factors the forest of the region. There are disturbances and more observation of them showing the the recent months have been discovered by the Delhi Fire Brigade of Hong currency mobile putting out a fire that broke out in the official Russian civilian airport. Judge one hopes that internal inquiry that has been ordered by the serious India will be completed early and is made public soon. Judging the IRS has been repatriated to his parent high court. Any other public servant who could have faced the force important. The fire followed by an investigation many recall the case of former soldier, including several members of the inquiry committee that had been constituted to probe a complaint of sexual harassment that had been launched by court staff against the judges led to such public outrage that the CBI had to opt out. Whatever be the resulting convulsions and discomfort and political resistance to this struggle, the people had found it because everybody knew but maintained a discreet silence about for various reasons. That is, that this incident has happened just after two recent developments of conflict matters when the first invasion of India revolution to an order by federal party taking cognizance of a complaint of corruption against a higher government official to the CBI report as to considering to make the as in which you look finance maybe restriction to act on complaints against the judges. The matter is before the court with respect to the final verdict. It has once again sharpened the focus on judicial accountability, raising questions about the effectiveness and transparency of this internal inquiry mechanism. Same instance happens to be a repulsive order passed by a High Court judge wherein the Lordship was of the view that grabbing body parts and breaking the were not enough to charge them accused with the rape or attempt to rape. Usually, this is not sure for the state by victim to brutal and insensitivity. What is the common factor in these three cases that involve high court judges? The answer is that although having passed the position is not a position, the office of nature and the Bangalore official and the system, legal analysis, and the selection of options and Indian judicial service. Others have also led to very high-level debate on the national judicial reform in this sector, sparked by the Parliament with the ratification of state assemblies and had dozens of regulations and Indian decisions integrated into the system society down the way that the court could have encouraged judicial review and reduced the legislation passed by the Parliament was in conformity with constitutional provisions while this debate is simpler and immediate solution would be आवाज कमी करा ना while this debate may go on, a much simpler and immediate solution could be to have an exclusive All India service for immigration and the judiciary on the pattern of the Women Public Service Commission, highly competitive, transparent, merit-based election process for the civil service such as the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service, the Indian Police Service, and Indian Revenue Service, constituting an Indian judicial service has been discussed in the past. This may be the right time to discuss its pros and cons and implement a transparent and merit-based system for the selection of judges. When state-level judicial service officers are selected to a competitive examination, why not have the same threshold at the national level will ensure course correction. There are several advantages in having an Indian judicial service. First, it would result in the higher judiciary becoming more inclusive and deeper entity in character. At present, the higher judiciary is a club dominated by few families, women, and the marginalized section of the society are very poorly represented.
Everyone has a need to open the door of the future to meritorious countries from all parts of India and all walks of life to compete for its beautiful persons. And recruitment may be entrusted to the UPSC by the Supreme Court stipulating the criteria and method of selection for senior judicial positions in consultation with high courts and legal luminaries. The process would also insulate the judiciary from any interference with the third in-house selection process. Reading in the public domain is obviously much better than the closed door meetings of collegium post-selection. A comprehensive training program will ensure that the selected are well versed in the multiple branches of law. The Supreme Court may also evolve a system of oversight to ensure integrity and to initiate disciplinary action if we lack integrity. In this writer's view, this will greatly help in restoring the faith of the people as well as the judiciary in the life parliamentary democracy. It is time to reform the in the social and diverse fabric of India's religious and socio-economic landscape. The social and diverse fabric of India's religious and socio-economic landscape, the work stands as one of the most significant yet underutilized institutions. This statutory entity is steeped in Islamic spiritual tradition whose the potential to influence socio-economic community. However, despite its profound heritage and substantial land holdings, the work has been hampered by inefficiency, mismanagement, and lack of transparency. It is indeed paradoxical that the work, as the largest landowning entity in India, which has over communities and conventions struggle with issues of education, healthcare, and social conflict, the very purpose of work is was established centuries ago was to serve the welfare of Muslims through the creation and maintenance of public goods such as schools, hospitals, libraries, and other charitable institutions. The health access to vast resource base is not being leveraged effectively for the betterment of the community has been a cause for great concern for many decades. State of the work. The proposed unified work management environment efficiency and development bill, also called the Work Amendment Bill 2024, aims to address some of the long-standing issues that are plaguing the work. These reforms are crucial as they acknowledge the widespread consensus within the Muslim community regarding the misuse of work properties. Without these, some members with zero credibility and the inefficiencies that have prevented work from maximizing the value of these assets. The current state of the workforce is a reflection of the broader economic issues of India's lack of accountability and transparency in the management of work properties has allowed for the perpetuation of inefficiency and corruption. One of the most glaring issues with the current workforce is the outdated mental structure. While work properties, many of these properties are rented out at rates which decades ago often as far as currently increased. Not only are these rents actually low in today's market, but even the meager amounts due are often not collected regularly. This situation is compounded by allegations of illegal cheating and factors which have significantly eroded the potential return that could have been used for community welfare. A classic example would be Jaipur's most central and famous shopping street known as Amai Road. This runs from Sanganeri Gate to Farm Festivals. Many main of the tenants transferred. Mirza Ismail, some of the properties located on Amai Road have been donated to the workforce by the private community and released over the board can allot these properties in rent, but it cannot sell them to anyone. Other such commercial properties of 100 to 400 square feet on Amai Road are fetching rupees 300 a month would fetch close to 25,000 a month when the rent policy are repeated. There are thousands of such cases and agreements across India in every state. The such a community report
Six estimated that the work could generate an annual income of 12,000 crores from its properties. However, surveys by the Ministry of Minority Affairs reveal that actual number of work properties exceeds 8.72 lakh today, factoring in inflation and revised estimates. The potential income could be as high as rupees 20,000 crore annually, yet the actual revenue generated remains 8.3 rupees 200 crores. The potential for revenue generation and investment in developer is enormous. Economic value of properties could fund the establishment of world-class institutions, schools, universities, hospitals, and more that serve not only the international and the society at large. Similarly, as inventions, foreign ambition, welfare is free, and now institutions that struggle to sustain themselves. Instead, we should aspire to create institutions that help to sustain and increase the amount of society that they become aspirational for all. The final work amendment bill, which we will see after the joint parliament committee, provides constructive solutions, must offer a very commitment towards the right of peace and the work development, leading to the overall ability of the committee by overall work and the intellectual of the.